Then come on, all the best. Come on, let's go. Good evening. Good evening, everyone. Welcome to the most special first episode of the CNS Dialogue Day. Your voice matters. With none other than Mr. Manish Paul. Hello, Thank sir. you. My name is Sudhir. Thank you. Good evening, sir. My name is Aisha. How are you? Very good, very good. Sir, to be honest, this is our first time interviewing a celebrity. And we're pretty nervous. How was your first time interviewing a celebrity? Firstly, I don't consider myself a celebrity. I think I'm very much a common guy. You watch me on TV and movies. But yeah, first time I was nervous. And I keep telling everyone, being nervous is good. That's very good. I've been hosting for some 18, 20 years now. But still, when I go on stage, I have butterflies in my stomach. I'm coming on the stage for the first time. Trust me, I was feeling a little nervous that मुझे आप लोगों को interview देना है. So I was feeling nervous. And my first time, yes, I was feeling मैं fumble ना कर जाऊँ. हर बार होता है you feel like यार कुछ गलती ना हो जाए, नाम ठीक ले लो. But I think वो जो nervousness है, that is very important. So उससे डरना नहीं. Always keep that. Thank you, sir. Well, sir, how about you take us back to the time when you were our age? Did you ever imagine being an RJ, DJ, and a podcaster yourself? What do you mean by our age? मतलब तुम मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया, तुम ये बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारी एज नहीं है, but 3-4 साल का फर्क है, so it's completely fine. So we are taking back 4 years, which is your age. So no, but so if I talk to you about my school days, so I'm from APS School, Sheikh Sarai, New Delhi, and I used to be a notorious boy. And I was not very interested in studies, but उसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो तो एक्टर बन जाते, ऐसा नहीं है. एक्टर बनने के लिए भी, होस्ट बनने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती. मैंने भी पूरी कंप्लीट करी. But I remember that something I loved during my school was this place, the stage. I always remember that I was always itching to be on stage. I remember that in our times, as you said, go back to our times. Suddenly I feel old. Our times we used to have cassettes, audio cassettes. And whenever we used to have anything happening on stage, maybe a dance or a performance, they would play the songs on the audio cassette. And जब भी वो अटकती थी, they would tell me, Manish, there's a fumble, do something. And they would actually just keep me on the stage that go and engage the audience. So I would come either mimic the teachers, mimic the actors, sing the song, dance like some actors, so I would keep everybody engaged. So that is what I was doing. But I never realized that whatever I was doing in school as fun, actually I was preparing myself for my career. And I had no idea about that. That whatever I was doing there, that would become my career and that would make me this capable that I would be sitting in front of two of you and you would be interviewing me. So I think God is kind. So when did you make the decision that you wanted to enter showbiz? So as I said, I was not very much keen on studies. I really wanted. मैं उतना ही पढ़ता था जितना मुझे लगता था important है. I would only study that much. My mother would tell me that when you know you can score more, why don't you study more? I said no, because I know I want to be an actor. I always wanted to say that, and in my first film, I used that dialogue, Malvinder ka James Bond. So I am from Malvinder, New Delhi, and I would call myself Malvinder ka James Bond. Then I used it in my first film also. But I was very clear because I somehow found this very interesting. Living someone else's life, creating new characters, being on stage, hosting people, making the show entertaining. I always found that very fascinating. So my father is a chartered accountant. He would take me to his office. He would say that तू ऑफिस आएगा तेरा थोड़ा दिमाग इधर लगेगा. बट थोड़ी दिन में उनका जो स्टाफ था उनका दिमाग मेरी तरफ लगने लग गया था. So that is when he decided. He said नहीं बेटा ये तो नहीं होगा. So we are 3 siblings. I have an elder sister, a brother, and me. So that is the time I think my father decided हम दो हमारे दो तीसरा वो तो मुंबई भेज दो. That is when he decided कि बेटा क्या करना है. ऐसे मुझे तो हीरो ही बनना है. मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा. So he said, okay, fine. I have no backing. We are not a filmy background. So no nepotism. So so I remember that one day I just took a call that I want to be Mumbai. So my father said that I don't know anyone. I said, don't worry, I'll go there. People will know us.
So somehow I just took the plunge one day, and I was in Mumbai giving auditions to a lot of people, failing, getting rejected in thousands of auditions. So why I mention this? Because nowadays I've realized, a lot of, especially your generation, a lot of people feel bad about rejections. No, don't feel bad about rejections. I think उसको positively लो यार. Fail नहीं होगे तो पास होने का मजा ही नहीं आएगा. So I always keep telling everyone, it's very, very, very important to fail also. It's very important to fall down 8, get up 9. So that should be the attitude, and that's what kept me. Days from showbiz till now, I was the first one who took the plunge. But they somehow they were confident. They gave me that confidence that okay, fine, if you want to go for it, whatever you do, give your best, and that's what I did. And trust me, they've been very, very happy. They feel very happy, and they're typical Punjabis. यहाँ कितने Punjabis बैठे हैं? How many Punjab? बस तुम्हारे माँ बाप शौक में बहुत बिलीव करते हैं मेरे माँ बाप की तरह, I know it. तो बस वही है, they are very happy, and वो बहुत खुशी शो ऑफ करते हैं. हमारा मुंडा मनीष पॉल है. So that's the reaction from them. So they had quite a positive reaction. Yeah, absolutely positive reaction, because obviously any parent feels scared when suddenly the kids decide to fly. They generally say, I want to do something else in some other city or some other country. It is difficult for the parents, but I think it's on us, as I keep talking about, to all the people here, all the kids here, that it's on you to make sure to make your parents proud. It's on you to work very hard, passionately towards whatever you want to do. So I keep telling everybody, they said actor नहीं होता तो क्या होता? मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या होता, मैं जो भी होता उसमें best होता. Because I really like hosting, but I love acting. Because in acting, as I said, you get to be somebody else for a few months. You get to prepare that guy. You get to live that person. So I think that's a different game altogether, and I love doing that. You started off wanting to be an actor too, right? Yeah. After being a very popular and successful personality as of today, if you have to look back and recollect any of the past days, are there any failures that not many know about, and would you like to share that with us? Yeah, absolutely. I love sharing my failures here, because success तो दिखती है, failure किसी को दिखता नहीं है. Failure आपको खुद को दिखता है. कई बार लोग होता है when they become successful, they generally don't talk about failures. उनको नहीं रहने दो, अच्छी बातें करें. But I love to talk about my failures, because my failures have made me, not my success. I think मेरे failures ना होते तो मैं सीखता नहीं कि मेरी कमियां कहाँ थी, गलतियां कहाँ थी. And I keep telling everybody, when you fail, don't look for a thing कि अरे यार उसने ये कर दिया या ऐसा हो गया होता. No यार, I think you have to look towards ourselves. हमारे से कोई कमी है, so उसको improve करो. So I remember that when I shifted to Mumbai, I remember that I went for an audition. So that was in the initial stages. So I was saying, so there are, just to let you all know, कि यहाँ पे हजारों की तादाद, जैसे आप लोग बैठे, ऐसे ही हम सब बैठे होते हैं ऑडिशंस के लिए, और यहाँ एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे ऑडिशन हो रहा होता है, और वो आपकी चूज करते हैं या यू कम. सो आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग, तो धीरे-धीरे मेरी बारी आ रही थी. आई सेड यस, एटलीस्ट मुझे बुलाएंगे. बट आई रिमेंबर दैट गर्ल सेड नो यू आर रिजेक्टेड. आई सेड एक्सक्यूज मी, यू डिडंट इवन गिव मी अ चांस टू टॉक. कहती नो यू डोंट फिट द बिल. आई सेड फिट द बिल, तो कहती नहीं यू डोंट फिट द कैरेक्टर. मैंने कहा ओके, मैं चुपचाप मैंने अच्छा जाते पूछ लेता हूँ जस्ट टू इम्प्रूव ऑन माय सेल्फ कि क्या कमी थी. एंड दैट वाज द फनीएस्ट आंसर आई गॉट. आई सेड मैम आई जस्ट वांट टू नो कि मैंने तो डायलॉग भी नहीं बोला, तो मेरे में कमी क्या थी, आप मुझे बताएं. आई वांट टू इम्प्रूव ऑन माय सेल्फ. कहते नहीं फॉर दिस कैरेक्टर हमें खानदानी लुकिंग लड़का चाहिए, आप खानदानी लुकिंग बिल्कुल नहीं लड़का. आई वाज लाइक व्हाट. एंड आई रिमेंबर कोई भी जल्दी होता उसको गुस्सा आ जाता. मेरी हंसी छूट गई. और उस हंसी में आई कॉल्ड माय फादर. मेरे पापा आपने झूठ बोला आज तक, हम लोग खानदानी नहीं है. पापा ने कहा क्या बकवास कर रहा है. मैंने कहा पापा यहाँ मुंबई में आने वाले लोग बोल रहे खानदानी नहीं दिख रहा. I learned one thing, that whatever comes your way, trust me, humor is the best savior. अगर आप हर चीज humor में ले जाएंगे, life is not good. How do you overcome these failures? As I said, I never feel bogged down. I never feel dejected, rejected, depressed. No offenses to all the people who feel that,
बिकॉज जिसको फील होता है उसे पता होता है, बट चलिए मैं अपनी बात कर सकता हूँ। रिजेक्शंस जो होते हैं उसको आप जितनी इंपॉर्टेंस दोगे ना वो उतना हावी होगा आप पे, दैट बिकम्स टू मच फॉर मी। I obviously I feel bad, I'm human. I feel bad, but let's say for 5-6 minutes I'm back because I feel rejection थोड़ी देर का ही होता है। There are more opportunities. There is so much to life. There are so many beautiful things happening. How can just one thing bog me down? So अगर मुझे एक जगह rejection मिला, I went on to the next one. Next मिला, I went on to the next, hundreds, thousands, making sure that I will be selected, and that day happened. So a lot of people said, "Hey, I felt bad. I was at home for 2 days." I said, "You were at home for 2 days doing what?" He said, "I was feeling sad." I said, "You've lost on 48 hours of your life, and that's the worst you can do to yourself. Why not keep working hard every minute?" And that's what I keep learning a lot from a lot of actors. I keep learning a lot from life. That one has to keep moving forward. Anything which keeps moving forward will make sure कहीं ना कहीं से जगह पहुंच जाएगी. So that is what keeps me trying. Was there anyone in particular that helped you through these failures? I think मैं अपने आप को बोलता हूँ जैसे आप बाहर से बैठ के सीखते हैं जिससे आएगा है. I'm a big ardent fan of Mr. Amitabh Bachchan, and I'll tell you another one of how many people, obviously everybody knows Amitabh Bachchan, right? You know Amitabh Bachchan? How many of you have seen a film called Mud? Okay, अच्छा ठीक है, लवली। जिन्होंने नहीं देखी उनको बताता हूँ, उसमें अमिताभ बच्चन साहब की चेस्ट पे यहाँ पे मर्द लिखा होता है, you know that? जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, उनकी छाती पे यहाँ मर्द लिखा होता है। अब मैं इतना बड़ा फैन हूँ बच्चन साहब का कि बचपन में इन मामले में है, I used to get milk, vegetables and everything for my house. My mom would tell me typical थैला पकड़ के जरा सब्जियाँ लेके आ, and I would say नहीं जाऊँगा। She would say why? ऐसे पहले छाती में मर्द लिखो। Trust me, and now I feel embarrassed. मैं मम्मी कहती हूँ, मम्मी मैं तो बच्चा था, आप ही रोक लेते मुझे यार। So I would wear a shirt with 2 buttons open, and my mom would want with sketch pen write मर्द जा और सब्जियाँ लेके। So गाँव में रहते ऐसे वो गॉड था किया मनीष को तूने, और मैं मोहल्ले में ऐसा थैला पकड़ के मर्द लेके चलता हुआ जाता था। सबको बताते हैं ये लड़का बहुत फिल्मी है यार। So I would do all that as a child, and I think बच्चन साहब से मैं बहुत कुछ सीखा है। How his life has been. It's been wonderful. He's seen the darkest, and he's back in how. I think whenever I've seen him, you have to keep moving forward. Nothing should bog you down. आप चलते रहो, बढ़ते रहो, वो बहुत important है। When I was leaving from Mumbai, my mother said a very important thing to me. She said, "Manish, एक चीज हमेशा याद रखना कि सूरज की चमक जो होती है ना, सूरज की जो रोशनी होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। So I think just keep shining like the sun. थोड़ी देर के लिए बादल आते हैं, the बादल is the clouds, are the rejections. वो थोड़ी देर के बाद हट जाते हैं, the sun is shining bright again. So I think that is what stuck to me, and I said, हाँ यार, ये हमेशा याद रखूँगा, and I just keep working hard towards that. Yeah. Wow, so that's really impressive. Thank you so much. Well, so apart from all that, how did you first begin podcasting? So podcasting, the idea came from, a lot of people ask me, here you are anyways hosting so much, why the podcast? I tell you where the idea came from. It's quite deep, but हाँ मुझे लगा, because I generally being actors, a lot of people meet you, they want to take pictures, they want to take selfies, but nobody wants to know you. A lot of people will meet you, they will just take selfie and they won't even say bye to you. They'll take a selfie and they'll move on. They won't even look back at you. So मुझे कई बार लगता था, how is this here? Like human connect is very important for me. I believe in that. When I'm here, sorry to suggest that I'll make sure that I meet everybody and go personally. I would like to shake hands with all of you. I'd like to meet you all. That is what I believe in. It's not that you have no, it's not about that. It's about the human connect. I believe in that. And I remember that one day I was sitting with a friend and I said, yeah, we as actors majorly have become a TV. We display pictures for people, they want to have you on Facebook or Instagram or on your WhatsApp, but nobody wants to know you. Nobody wants to know what an actor is going through. And that is where I started a podcast. And trust me, my podcast is not at all scripted. The actors just walk in, we play the camera, and we talk. That how are you? Because that is one question a lot of people don't ask actors, how are you doing? All they want to know is, आपकी next film कौन सी आ रही है?
next show कौन सा है, which is good for us. But at times I felt that वो थोड़ा सा human touch कहीं missing था, and that is where the podcast idea came from. And Touchwood people really enjoyed it. The episode where Bharti came, people know Bharti as a comedian, you know सबको हंसाती है, but उसकी life में कितना कुछ हुआ nobody knew about that. You know when that came out, it was a different picture altogether. You know, same with Krishna, same with Govinda sir, you know, and so that is where the idea came from, and I'm really enjoying it. Wow. So CNS now has its very own podcast review. The CNS Podcast. Your voice matters. Wow, इतने अच्छे से बोला आप दोनों ने ऐसा. Yeah. So what are your thoughts on this? I think it's a great idea. I was talking to Sujay sir and I told him, I said, when he told me about this, I said, it is great, yeah, because you people don't even know what kind of great facility you're getting. People have to spend so much, and आप लोग तो आराम से आपके स्कूल में आ गए हैं, and you get to interview people, you get it on Instagram now, आपकी recordings हैं, you get to learn so much. So I think it's a great initiative. I hope यहाँ पे एडमिशन अभी खुली है सर, मैं आ सकता हूँ, एक साल के लिए आ जाता हूँ, मैं इस स्टूडियो में थोड़ा और सीख के चला जाऊँगा आप लोगों से, तो आई थिंक आई वुड लव टू डू दैट. अगर मैं होता तो मैं आई थिंक वापस आ जाता एक साल फॉर द पॉडकास्ट स्टूडियो वंस अगेन. Also, a great advice from you. You on the buffet with this. How big? I can't 6 feet 2 inches. 6 feet 2 inches. Yeah. So, what is your take on podcasting as a career option? I think it's a great one, yeah. You know, I'll tell you one thing. when I shifted to Mumbai, so I come from a typical Punjabi background, जहाँ पे सब कोई banker है, कोई chartered accountant है, कोई job कर रहा है. और जब मैं मुंबई पहुंचा, so a lot of people were asking my mummy, ये करता क्या है? तो मम्मी ने कहा नहीं वो hosting कर रहा है वहाँ पे. अच्छा, hosting कर रहा है, लेकिन काम क्या करता है? तो मुझे तो लगता है, अरे ये मेरा काम है. नहीं वो तो अनाउंसर हो गया ना, तू मतलब अनाउंसिंग करता है, पर घर कैसे चलता है वो तो. So a lot of people couldn't imagine that hosting could be a career. So I think similarly, I think it's a great thing because in our schools, let's say, hosting wasn't taught, hosting wasn't given that much of an importance. No offenses, but hota tha, you know, things are changing. People are taking these things very seriously, and I think it's a great thing that podcasting आप यहाँ पे सीखोगे. It is a great career. You know, so I feel you can see a lot of people doing so well, and now in last 2 years, podcasts have become big. People want to be on a podcast. You know, पहले लोगों को लगता था, अरे यार 1.5 घंटे का एपिसोड कौन सुनेगा या देखेगा. But now people watch it. They want to know more. So I think it has a great future. What do you have any advice, like tips and tricks for CNS to build a very cool podcast? Yeah, I have a trick. जो भी करो, मनीष पॉल पॉडकास्ट से थोड़ा सा कम करना बस. वरना तुम लोग की फैसिलिटी बहुत कमाल की, तुम लोग बीट कर रहे हो मेरे को यार बहुत जल्दी. तुम मेरे को तो टेंशन हो गई है. मैं खुद ही अपने पैर पे बुलाती मारने आया यहाँ पे तुम लोगों को. हाँ तो नहीं, बट आई थिंक कोई टिप्स नहीं है यार. आई थिंक आई सॉ द स्टूडियो. मैंने अभी पिक्चर्स ही देखे हैं, सी लाइन नाउ, बट व्हाट आई हर्ड, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यूज द बेस्ट इक्विपमेंट्स. एवरीथिंग इज सुपरलेटिव, एंड आई थिंक उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता. और आज आई थिंक आप मेरे साथ भी वहाँ पे कुछ करने वाले हो. बताओ इससे बताओ क्या हो सकता है. टैलेंट बड़ा कभी मन नहीं है. Thank you so much, sir. One of my most favorite tracks. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जड़ी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी. कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा,
हाँ। पॉडकास्ट न्यू जो प्रेजेंट हुआ है, व्हाट इज द पॉडकास्ट एंड क्या उसके लिए ज़रूरी है, और अभी से इसे शुरू करना कितना ठीक है? यार ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैं अभी सुजय से वही बोल रहा था, एंड सुजय मीनल ने जो आइडिया निकाला है दैट यहाँ पे एक पॉडकास्ट सिखाया जाए और प्रोफेशनल तरीके से। एक तो होता है कि चलो मुझ जैसे इनके दोस्त हैं जो चलो आएंगे बताएंगे, लेकिन इन्होंने जो फैसिलिटी दी है आई थिंक दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। और आई थिंक ये बच्चों को भी पता नहीं है कि इनको इसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है, बिकॉज प्रॉपर स्टूडियो में प्रॉपर माइक सेटअप विद लाइट्स एंड कैमराज, आई थिंक इट्स गोना बी गेम चेंजर। जो लोग पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, जी। जैसे आज काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक पे काफ़ी जी। काम करते हैं, पॉडकास्ट के लिए आने जो चाहते हैं उन्हें क्या ज़रूरी है? यार आई थिंक उस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है जिसकी वो बात कर रहे हैं, उस शख्सियत को जानना बहुत ज़रूरी है जिससे वो बात कर रहे हैं, और आई थिंक वही चीज़ें यहाँ पे और सीखने को मिलेगी। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड उनके लिए होने वाला है जहाँ से वो एक्सपर्ट्स बन के निकलने वाले हैं। आई थिंक आप अगर हम पढ़ाई भी करते हैं यहीं से पढ़ के निकलते हैं और लाइफ में कुछ करते हैं, और आई थिंक ये पॉडकास्ट जो यहाँ पे सिखाया जाएगा उनको प्रोफेशनल तरीके से उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी जो वो खुद देख पाएंगे, जो आई थिंक दुनिया देख पाएगी, बिकॉज अब वो इंस्टाग्राम पे होने वाला है, यूट्यूब पे होने वाला है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है बच्चों के। और उसके लिए ज़रूरी क्या है? अच्छा दिखना तो ज़रूरी है? नहीं, अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। मुझे देखिए, मैं कोई बहुत गुड लुकिंग आदमी नहीं हूँ यार, बट मुझे लगता है आई थिंक बात करना आना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा अपने टॉपिक की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही 3-4 सवाल जो हैं वो हर लोग पूछते हैं, लेकिन उन सवालों से हट के जब आप सीखोगे कि ये भी पूछा जा सकता है, ये नया लाया जा सकता है, ह्यूमर डाला जा सकता है, ये चीज़ें अगर सब लोग सीख जाएंगे तो आई थिंक बहुत अमेजिंग होगा। थैंक यू सो मच। मैं सुजय जयराज हूँ। वी रन दिस स्कूल छत्रपुर नर्सरी स्कूल, एमनोरा पार्क टाउन, पुणे में। अच्छा, एंड ये प्रोग्राम कैसे आया, थॉट में कैसे किया है, क्या उद्देश्य है थोड़ा सा? सो पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे लोग को बहुत कॉन्फिडेंस देगा, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, रिसर्च के बारे में, कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में। वो लोग नए आइडियाज़ निकालेंगे, आइडिएट करेंगे, और बड़े बड़े हस्तियाँ जो है अलग अलग फील्ड से, सेलिब्रिटीज़, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्पोर्ट्स, फिटनेस, सबको इंटरव्यू करेंगे। तो उनको जानने को भी मिलेगा कि सक्सेस के पीछे क्या जाता है, और एक तरीके से उनको मोटिवेट भी करेगा कुछ अच्छा करने के लाइफ में, लॉन्ग टर्म में।